that is study of light, study of sound. ठीक है? I hope you have revised before coming to the lecture, students. ठीक है? फटाफट रिवाइज कर लेते हैं what we have seen in the previous lecture, right? Okay. My question to you is, मैकेनिकल वेव्स कितने टाइप के होते हैं? मैकेनिकल वेव्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. कौन से वेव्स है स्टूडेंट्स? कौन से वेव्स है? Mechanical waves are of 2 types. What are the 2 types of waves? Mechanical wave, students. The first one is transverse wave, and the second one is longitudinal. Yes, so mechanical waves are of 2 types. That is transverse waves and longitudinal wave, right? अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये जो वेव्स है वो वेव्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये वेव्स डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. ये वेव्स क्या करते हैं? मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, राइट? पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, right? So now my question to you is, students, in case of transverse wave, अगर वेव आगे जा रहा है, स्टूडेंट्स, तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा स्टूडेंट्स? If the wave is traveling in the forward direction, how will particle vibrate, students? The particle will vibrate perpendicularly. Up and down बोलने के बेटर है perpendicularly बोलो. क्या बोलो स्टूडेंट्स? Up and down के बदले क्या बोलेगा स्टूडेंट्स? Perpendicularly बोलने का. तो स्टूडेंट्स, the direction of wave कैसे होता है स्टूडेंट्स? The direction of wave is perpendicular to the direction of vibration. The direction of vibration is perpendicular to the direction of wave. तो ये वेव होता है ट्रांसवर्स वेव स्टूडेंट्स. क्या है ये स्टूडेंट्स? ये वेव है ट्रांसवर्स वेव. तो ये ट्रांसवर्स वेव स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. ये हमने देखा था इन द लास्ट लेक्चर. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या पढ़ा? स्टूडेंट्स, in longitudinal wave, students, the direction of wave and students, the direction of vibration, particle का direction of vibration, students, particle का direction of vibration कैसा होता है? Direction of vibration कैसा होता है? Parallel होता है. That's correct, students. Direction of wave and vibration, students, कैसे होते हैं? एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, राइट? दे आर पैरेलल. तो ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल वेव, राइट? अच्छा, अभी ट्रांसवर्स वेव में स्टूडेंट्स क्या फॉर्म होता है? पार्टिकल्स जब ऊपर जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स वेव में क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसवर्स वेव में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जो पार्टिकल्स ऊपर गए उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट, उसको वी कॉल इट एज क्रेस्ट. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रेस्ट. एंड जो पार्टिकल्स मीन पोजीशन के नीचे जाते हैं, द पार्टिकल व्हिच ट्रैवल्स बिलो द मीन पोजीशन, करेक्ट स्टूडेंट्स, को बोलते हैं हम लोग ट्रफ. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्रफ. तो स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव फॉर्म्स क्रेस्ट एंड ट्रफ. Right? Whereas longitudinal wave, students, what does longitudinal wave forms? What does longitudinal wave form, students? Longitudinal wave forms compression and, very correct students, it forms compression and rarefaction. Compression and rarefaction. Compression में particle comes close. Compression में स्टूडेंट्स, compression में particle comes close to each other. Rarefaction में particles क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? Particles दूर चले जाते हैं. Particles go away from each other. Are we understanding this? So students, this is what we have seen in the previous lecture, right? अच्छा, इसमें से स्टूडेंट्स साउंड कौन है? Sound is an example of transverse wave या longitudinal wave. डिस्कस किया था अपन ने. Sound is an example of, very correct, sound is an example of longitudinal wave.
व्हाट इज साउंड एन एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ये हो गया अपना रिवीजन स्टूडेंट्स। अभी हम लोग फटाफट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग ना अभी सिर्फ साउंड पे मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। डन एवरीबॉडी? Now if you try to see students, I'll draw a diagram of longitudinal wave again, ठीक है? तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, longitudinal wave बनाया मतलब compression बनाया and rarefaction बनाया and क्या बनाया, rarefaction। again क्या बनाया, compression बनाया and क्या बनाया, rarefaction बनाया। again rarefaction is followed by compression is followed by rarefaction। So students, what I have is I have series of compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction। तो students compression rarefaction मिलते जाएगा। But compression and rarefaction कब मिलेगा, जब भी स्पीकर ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। compression and rarefaction स्पीकर ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, तभी मिलेगा जब भी स्पीकर ऑन रहेगा। When the speaker is on, when there is sound wave students, you will see the air will have compression and rarefaction। अच्छा, अगर स्पीकर ऑफ रहेगा students, अगर स्पीकर ऑफ रहेगा, if the speaker is off, air molecules will they be equally distributed or will they be uniformly distributed or non-uniformly distributed? अगर स्पीकर ऑफ रहेगा students, अगर स्पीकर ऑफ रहेगा तो स्टूडेंट्स ये जो वेव और ये जो पार्टिकल्स है, how are they going to be students? They are going to be uniformly distributed. The particles are going to be distributed uniformly, equidistant रहेंगे students, equidistant रहेंगे। ये सब नो स्टूडेंट्स, there is no disturbance। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सारे जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स, सारे एयर के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे रहेंगे, अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे स्टूडेंट्स। दे आर गोइंग टू बी इक्विडिस्टेंट। जैसे ही स्टूडेंट स्पीकर को मैं ऑन करेगा, स्टूडेंट्स क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन जनरेट होगा। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस कॉन्सेप्ट सो फार, ठीक है? अच्छा, अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, मैंने अगर एक प्रेशर मेजर करने का डिवाइस लिया, एंड स्टूडेंट्स अगर स्पीकर ऑफ रहेगा एंड मैं हर पॉइंट पे प्रेशर मेजर करते गया, मुझे प्रेशर का वैल्यू सेम मिलेगा या अलग अलग रहेगा? करेक्ट, प्रेशर का वैल्यू क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेम रहेगा। अगर स्टूडेंट स्पीकर ऑफ है and pressure measuring devices students, if I measure pressure at every point in the air column, pressure कैसे रहेगा students, same रहेगा। कैसे रहेगा students, pressure is going to remain same, the pressure is going to remain same। तो students I will see that अगर मैंने pressure का ग्राफ निकाला, अगर स्पीकर ऑफ रहेगा students and अगर मैंने pressure का ग्राफ निकाला, तो I will see that at every point students the pressure is going to be same. At every point students the pressure is going to be same. तो students pressure का एक value रहेगा, let us consider that value to be mean pressure। क्या बोला मैंने, mean pressure। Did you understand this? जब भी मैं स्पीकर ऑफ रखता है and हर पॉइंट पे अगर students if I measure the pressure, I will notice that the pressure is going to be constant। pressure कैसे रहेगा students, constant रहेगा। pressure is going to be same at all the points। तो वो जो pressure है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, mean pressure बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको students, we are now going to call it as mean pressure। everybody understood so far? amazing। अभी मैंने क्या किया students, स्पीकर को ऑन किया मतलब अभी ये जो एयर है it has now disturbed, yes or no? The air has now disturbed, the air molecules have now disturbed। तो students compression refraction generate हुआ। Now students compression में molecules क्या होते हैं students, compression में molecules क्या होते हैं, पास में आ जाते हैं। चलो, so fingers को अपने पास में लेके आए, you are compressing your fingers students।
What do you feel when you compress? Make a tight fist, students. Make a tight fist. Make a tight fist. क्या क्या फील हो गया आपको? क्या फील हो गया स्टूडेंट्स? You feel the pressure is increasing or decreasing, students? You feel the pressure is increasing or decreasing? That's correct, students. The pressure is increasing. The pressure is increasing. Yes or no, students? मतलब students, जब भी हवे में कंप्रेशन होगा, जब भी हवे में कंप्रेशन होगा स्टूडेंट्स, एंड अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगाया, तो प्रेशर मीन वैल्यू से बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर मीन वैल्यू से बढ़ेगा या कम होगा स्टूडेंट्स? Correct, students. The pressure will increase. So what do I understand, students? What do I understand? If I look at compression, students, the pressure, I will see that the pressure has increased. The pressure has become greater than the mean value. The pressure has become greater than the mean value. Did you understand this? अच्छा, अभी students compression है ना? Compression is followed with rarefaction. Yes. Compression is followed with rarefaction. Rarefaction में क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर चले जाते हैं. चलो अभी फिंगर्स को क्या करो? दूर करो, थोड़ा धीरे धीरे दूर करो स्टूडेंट्स. प्रेशर क्या होने लगा स्टूडेंट्स? What happened to the pressure? You will feel that the pressure has decreased. The pressure will decrease below the mean value. Yes or no, students? The pressure will decrease below the mean value. Did you understand this? पहले pressure increase हुआ, compression में pressure increase हुआ, rarefaction में pressure क्या होगा students? Rarefaction में the pressure is going to decrease. So students, जिधर rarefaction होगा, उधर students pressure क्या होगा? Mean value से नीचे चला जाएगा. Did you understand this? Did you understand this? Again, students. Rarefaction is followed with compression. तो compression पे students आपको क्या मिलेगा? वापस pressure maximum मिलेगा. Rarefaction में students वापस pressure क्या हो जाएगा? तो pressure will decrease. तो students आपको क्या होगा? आपको एक pattern form होगा. You will have a pattern form, students. You will have a pattern form. You will have pressure increasing, decreasing. The pressure increases, pressure decreases. Are we understanding this? But students, pressure is the first से नहीं में increase decrease होता. Pressure change is gradual. How is pressure change, students? Pressure is gradually increase होता है. देखो pressure क्या होगा students? Gradually increase होगा students. हल्लू increase होगा students. The pressure is going to increase gradually. The pressure is going to increase gradually. Students, it is going to achieve maximum value. It is going to achieve maximum value, students, and then pressure will start falling off. The pressure will start falling off क्योंकि students अभी refraction आने वाला है, तो इसके लिए pressure अभी gradually decrease होते जाएगा students. The pressure is going to decrease gradually. It will become the minimum. It will become minimum, students, and again the pressure will again start increasing. The pressure will start increasing. Are we understanding this? ऐसा रपारप pressure कम ज़्यादा नहीं होता students. कैसे होता है students? Gradually increase और decrease होते जाता है. And students, इसके लिए अपने को students ये pressure का एक ग्राफ मिलता है. प्रेशर का एक ग्राफ मिलता है स्टूडेंट्स. एंड ये प्रेशर का ग्राफ किसके जैसे दिख रहा है? प्रेशर का ग्राफ किसके जैसे दिख रहा है? प्रेशर का ग्राफ स्टूडेंट्स, करेक्ट, प्रेशर का ग्राफ स्टूडेंट्स क्रेस्ट एंड ट्रफ जैसे दिख रहा है. ये सब स्टूडेंट्स प्रेशर वेरिएशन का ग्राफ. व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? दिस इज ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन. क्या स्टूडेंट्स? दिस इज ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन. अभी आप सोच रहे होंगे ना डेंसिटी किधर से आया पिक्चर में. तो स्टूडेंट्स जैसे प्रेशर चेंज होता है वैसे भी डेंसिटी भी चेंज होता है स्टूडेंट्स. Are you understanding this? I'll give you an example of density shortly, students. But what is this graph of, students? The graph which I have made, the graph which has been formed is the graph of pressure and density. Did you understand this? And the graph looks like a transverse wave. What does this graph look like, students? This graph looks like a transverse wave. Everybody understood this? Yes? अच्छा, अभी students आप सोच रहे होंगे डेंसिटी इंक्रीज हो गया, कंप्रेशन में डेंसिटी इंक्रीज हो गया एंड रेफ्रैक्शन में डेंसिटी डिक्रीज हो गया. यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ.
You must be wondering how. Let us take an example, students. Let us take an example. दो क्लासरूम्स है, दो क्लासरूम्स है, सेम साइज के क्लासरूम्स है. These two classrooms are of same size. मतलब can I say volume is same? Volume is same. Yes. Now if you can recall, what is formula for density? Density is equals to mass upon volume. Did you understand this? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा 8th स्टैंडर्ड में. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. अच्छा, मैंने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा. क्लास कांस्टेंट है मतलब क्लास सेम साइज का है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा. इसका मतलब डेंसिटी अभी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बताओ मुझे. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी किसके ऊपर में डिपेंड करेगा? डेफिनेटली डेंसिटी इज गोइंग टू डिपेंड ऑन मास. ठीक है, तो सेम क्लासरूम में स्टूडेंट्स, ये क्लासरूम का डेंसिटी अभी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास के ऊपर डिपेंड करेगा. Now my question to you is, students, my question to you is, ये क्लासरूम में गच्चा-गच बच्चा भर गया, बहुत सारा बच्चा है, लेट अस से 200 बच्चे, एंड ये क्लासरूम में सिर्फ 20 बच्चे. 20 बच्चे. कौन से क्लासरूम में मास ज्यादा है? कौन से क्लासरूम में मास ज्यादा है? 200 में स्टूडेंट्स, 200 में मास ज्यादा है. 200 में मास ज्यादा मतलब वो क्लास का डेंसिटी क्या होगा? वो क्लास का डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा. वेरी नाइस. 20 बच्चे वाला क्लास है, 20 बच्चे वाला क्लास है, उसका मास कैसे होगा? 20 बच्चे वाला मास is going to be less. If the mass is less, then definitely density will be less. Density will be less. Are we understanding this, students? तो students, ये जो क्लास है, can I say this class is compression? And what is this class? This class is 20 बच्चों वाला class is rarefaction. Rarefaction. तो students, जब भी compression होता है, whenever there is compression, air का density क्या हो जाता है? Increase हो जाता है. And students, जब भी rarefaction generate होता है, air का density क्या हो जाता है? Decrease हो जाता है. Are we understanding this? Are we understanding this? So students, do I have same graph for pressure and density as well? तो pressure and density का ग्राफ कैसा है students? Pressure and density का ग्राफ same है. Whenever you have compression, the pressure and density of the air increases. It gradually increases and then it starts dropping off. Whereas when you have rarefaction, the pressure and density becomes less than the mean value. The pressure and density becomes less than the mean value. Any questions you have? Any questions you have, students? Any questions you have? Do you have any questions? So students, you have this graph in your textbook itself. You have this graph in your textbook itself. If you see on page number 128, on page number 128, students, on page number 128, जब भी कंप्रेशन होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? प्रेशर एंड डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा. जब भी रेफ्रैक्शन होगा, देखो रेफ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? दूर चले गए. तो स्टूडेंट्स, प्रेशर एंड डेंसिटी विल स्टार्ट decreasing. So you have a waveform which is formed. This waveform is of pressure and density, students. Everybody understood this? Any questions so far? Any questions so far? Any questions so far? All right. So moving on. Now let us look at the another part. Yes, let us look at the another part. Okay. Now if you try to understand, students, इसके बाद there are certain characteristics of wave, students. There are certain characteristics of wave. ठीक है? So let us look at the characteristics of wave, students. ठीक है? So now ये wave का characteristics जानने के लिए सबसे पहले ना मैं pressure and density का waveform देखेगा. Pressure and density का waveform कैसे दिखता है? ट्रांसवर्स वेव जैसे दिखता है. कैसे दिखता है स्टूडेंट्स? प्रेशर एंड डेंसिटी का वेवफॉर्म लुक्स लाइक अ ट्रांसवर्स वेव. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऑल राइट. नाउ इफ यू ट्राई टू सी स्टूडेंट्स, मैं अगर अलग अलग पॉइंट्स लेगा,
if I take different points on this graph, students, if I take different points on this graph, ये point पे tell me, is the value of pressure maximum? Is the value of pressure and density maximum? ये point पे, is the value of pressure and density maximum? No. अच्छा, अगर मैंने ये point consider किया, is the value of pressure and density maximum? Yes. At this point, let us say at point C, the pressure and density is maximum. तो ये जो students, ये जो point है, जिधर आपको pressure and density maximum रहेगा, उस point को अपन बोलते हैं amplitude. क्या बोलते हैं? Amplitude. क्या बोलते हैं उसको? Amplitude. Amplitude is given by capital letter A. Amplitude is given by capital letter A. So what is amplitude, students? Amplitude मतलब maximum value of pressure and density in air. What is amplitude, students? Amplitude is maximum value of pressure and density in the air. Everybody understood so far? Everybody understood this so far? Yes, amplitude मतलब maximum value of pressure and density in air. Yes. अच्छा, अभी ना students में दो sound निकालेगा. I'm going to form two sounds. You have to tell me कौन से sound का amplitude ज़्यादा है. Yes, are you ready for the experiment, students? I'm going to make two sounds. You have to identify which sound is going to have maximum density and maximum amplitude. Yes or no, students? Okay. So let us look at the observation. The first observation is, hi, I am physics teacher. That is first observation. Okay. And the second observation is, hi, I am physics teacher. कौन से observation में the amplitude is more, students? That's correct, students. जिधर मैंने चिल्ला के बोला ना, I am physics teacher, students. वहां पे students amplitude ज्यादा है. वहां पे students जो sound generate हुआ students, उसका amplitude ज्यादा है. Are we understanding this, students? Yes. And students जहां पे मैंने एकदम हल्के से बोला ना, एकदम धीरे से बोला ना, उसका amplitude क्या है, students? कम है. तो can I say, students, amplitude decides if the sound is loud or less loud. Yes or no? What does amplitude decide, students? Amplitude decides. Beta D is density. Pressure and density. P and D मतलब pressure and density. ठीक है? तो my question to you is, what does amplitude decide, students? Amplitude decides the loudness of sound. What does amplitude decide? The amplitude decide the loudness of sound. अगर amplitude ज़्यादा होगा, मतलब sound कैसे होगा? Sound loud रहेगा. अगर amplitude कम होगा, मतलब sound कैसे रहेगा? Sound कैसे होगा? धीमा होगा sound. Yes, the sound is going to be less loud. Everybody understood the first characteristics. Students. So the first characteristics is amplitude. What is first characteristics? The first characteristics is amplitude. And what is amplitude? The amplitude is maximum value of pressure and density. Amplitude is maximum value of pressure and density. Did you understand this? This is given by capital letter A. What is this given by, students? Capital letter A. चलो अभी हम लोग क्या करेंगे? दूसरा characteristics पढ़ेंगे. ठीक है? We are now going to learn other characteristics. ठीक है? Now pay attention to this, students. Pay attention to this. ये characteristics आपने 9th standard में भी पढ़ा है. This characteristics you have also learned in standard 9. Now, if you try to see, students, एक compression and एक refraction. एक compression and एक refraction.
one compression and one refraction together forms one cycle. One compression and one refraction together forms one cycle या one oscillation भी बोल सकते हो. समझा क्या बोला मैंने? एक compression and एक refraction together forms one cycle या one oscillation. Did you understand this? Everybody understood this? So students, the next characteristics we are going to learn is frequency. The next characteristics we are going to learn is frequency. Now, what does frequency says? The frequency is number of cycles of compression and refraction, or high pressure and low pressure. I'll repeat, students. What is frequency? Number of cycles of compression and refraction, or high pressure and low pressure is called as in 1 second. In 1 second is called as frequency. तो students, एक cycle मतलब क्या? एक compression and एक refraction. What is one cycle? One compression and one refraction. एक सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल्स जनरेट हो रहे हैं? एक सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल्स जनरेट हो रहे हैं? That is called as frequency. Everybody understood this? So number of cycles of compression and refraction, or high pressure and low pressure in 1 second, in 1 second is called as frequency. Is called as frequency. Did you understand this? Did you understand this? So I'll give you an example, students. I'll give you an example. The example is very straightforward. मैं दो waveforms बनाता हूँ, A and B. I make two waveforms, students, A and B. ठीक है? And ये जो students waveforms है, उसको अच्छे से देखो. Measure the cycles generated. Measure the cycles generated. These cycles are generated in time period of 1 second. Yes, and the another cycle is generated. The another cycle is also generated in time period of 1 second. तो मुझे बताओ अभी A waveform का frequency कितना है, B waveform का frequency कितना है? You have to measure the cycles created, students. एक सेकेंड में कितना साइकिल क्रिएट किया है वो आपको मेजर करना है. Let us measure it together, students. ठीक है? अभी फर्स्ट वेव में देखो, वन कंप्रेशन एंड वन रिफ्रैक्शन, एक साइकिल हो गया. ये दूसरा साइकिल हो गया, तीसरा साइकिल हो गया, फोर्थ साइकिल हुआ, फिफ्थ साइकिल हुआ. तो स्टूडेंट्स एक सेकेंड में कितने साइकिल्स हुए? 5 साइकिल्स हुए. तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? वेव ए का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 5 हो गया. Did you understand this? Did you understand this? Amazing, 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 amazing. Did you understand this? All right, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे? बी वेव को गिनते हैं, बी वेव को गिनते हैं. ठीक है, बी वेव को गिनते हैं. 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So students, in 1 second, B wave forms 10 cycles. So students, frequency कितना हो गया? What is the frequency, students? That's correct, students. The frequency is 10. What is the frequency, students? The frequency is 10. अच्छा, 10 का कुछ तो यूनिट होना चाहिए ना? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होना चाहिए ना? Do you know what is a unit of frequency, students? You have learned it in standard 8. The frequency का unit is hertz. क्या होता है frequency का unit? Hertz. Frequency का unit is hertz, given as Hz. तो students, first wave है, उसका unit is, उसका frequency is 5 hertz, and second wave है students, उसका unit is, और उसका value is 10 hertz. Everybody understood this? Everybody understood this? So what is frequency, students? What is frequency? Frequency मतलब the number of cycles of
compression and rarefaction, or high pressure density and low pressure density in 1 second. We are talking about 1 second, students. That is called as frequency. Now remember, students, remember very properly, frequency is given by nu. What is frequency given by? Nu. Frequency is given by nu. Nu. ये frequency का symbol है, students. हमेशा ऐसा frequency नहीं लिखते बैठने का. क्या लिखने का? ऐसा symbol बनाने का. Stylish V बनाने का. क्या बनाने का? Stylish V. Stylish V stands for nu. And SI unit of frequency is hertz. क्या होता है, students? Hertz. Everybody understood so far? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. अच्छा, मैं अभी सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा आपको डिसाइड आंसर सुनने का, आंसर आपको बताने का. ठीक है, चलो. अभी 1 सेकेंड में, in one second, if there are 500 vibrations, what is the frequency? In 1 second, there are 500 vibrations. What is the frequency? 500 vibrations मतलब क्या? 500 cycles. 500 vibrations मतलब क्या? 500 cycles. So what is the frequency, students? Definitely the frequency is going to be 500 hertz. Amazing. Next question, students. Next question. अभी ना question थोड़ा tricky होने जाएगा. The next question is, students, 2 seconds में students, 2 seconds में अगर 800 vibrations create हुए, 800 vibrations create हुए, what is the frequency? क्या बात है, very nice. 2 seconds में अगर 800 vibrations create हुए तो definitely frequency is going to be 400 hertz. कितना आएगा, students? 400. अपने को 2 seconds नहीं देखना है, अपने को 2 seconds में कितना जनरेट हुआ है वो नहीं देखना है, अपने को कितना देखना है, 1 second का देखना है ना. तो अगर 2 second में 800 है, मतलब 1 second में कितना आएगा? In 1 second, they are going to be 400. So therefore, the frequency is going to be 400 hertz. Everybody understood this? No, frequency does not change. Sound का frequency जो होता है ना, वो source के ऊपर depend करता है. ठीक है? All right. आगे जाके वो change नहीं होगा. Done? Amazing. Next. अच्छा, आगे बताओ, आगे क्वेश्चन पूछूं. ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ये थोड़ा ट्रिकी है. 1 second में, let us see how many of them can get it correct. In 1 second, you have 500 compressions and 500 rarefactions. Tell me what is the frequency? देखा, बहुत लोगों ने आंसर गलत दिया. डैनियल नहीं, कौन है? गया वो. आया ने बराबर से दिया, तीर्थ ने बराबर से दिया, ऐश्वर्या ने बराबर से दिया. The correct answer is रिया ने बराबर से दिया. Correct answer is 500 hertz. क्या है correct answer, students? The correct answer is 500 hertz. मैंने क्या बोला? कंप्रेशन कितना जनरेट हुआ? 500 कंप्रेशंस जनरेट हुए, 500 रेफ्रैक्शंस जनरेट हुए. एक कंप्रेशन एंड एक रेफ्रैक्शन क्या बनाता है? एक साइकिल बनाता है. तो 500 कंप्रेशंस एंड 500 रेफ्रैक्शंस कितने साइकिल्स बनाएंगे? 500 साइकिल्स बनाएंगे. ये सब नो स्टूडेंट्स. अगर 1 सेकेंड में 500 साइकिल्स जनरेट हुए तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? 500 हर्ट्ज. डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Did you understand? तो स्टूडेंट्स दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमेशा आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? आपको साइकिल्स देखना है. कितने टाइम में? 1 सेकेंड में. You have to look at the number of cycles in 1 second.
Number of cycles in 1 second is called as frequency. दिमाग में चिपका लो, बहुत important concept है. This is a very important concept, students. Everybody understood so far? Everybody understood so far? So we have seen two characteristics, students. We have seen two characteristics. The first one is amplitude and the second one is frequency. The first one is amplitude and the second one is frequency. Done, everybody? Amazing. Chalo. Abhi, let us now talk about the third characteristic, students. Let us now talk about the third characteristics. Okay? I am going to draw two waves. I am going to draw two waves. Okay? I am going to draw two waves. Just look at these two waves and just look at these two waves, students, and tell me what do you observe. Okay? ये A wave है and this is for B wave. ठीक है? Wave बनाया नहीं है अभी तक मैंने. ठीक है? All right. चलो. Now what I'm going to do is I'm going to keep amplitude constant. I'm going to keep amplitude constant. ठीक है? I'm going to keep amplitude constant. This is wave 1. This is wave 1. And amplitude constant रखना मैंने. This is wave 2. This is wave 1 and this is wave 2. दोनों में क्या difference है? Can you tell me? दोनों में क्या difference है? What is the difference between two waves? Correct. Wave का length अलग अलग है ना students? Wave का length बेटा amplitude same है ना? देखो amplitude same है. Amplitude same है. But students अलग क्या है? What is different, students? What is different? The different is wavelength. What is different, students? The different is wavelength. So the third concept is wavelength. What is the third concept, students? The third concept is wavelength. Everybody understood this? So the wavelength होता क्या है? What is wavelength, students? What is wavelength? Wavelength is the length of the wave. Wavelength is the length of the wave. But अभी question होगा, सर ये wavelength measure कहाँ से करें? Where should I start wavelength? Where should I start the measurement of the wave, students? तो बहुत simple है, students. कैसे करने का यहाँ पे ध्यान दो. Look at this very properly. Look at this very properly. जिधर से आपका compression चालू होता है, जिधर से आपका compression चालू होता है, and students जिधर आपका refraction खत्म होता है, जिधर आपका compression चालू होता है, and जिधर आपका refraction खत्म होता है, that entire distance is wavelength. That entire distance is wavelength. Did you understand this? Did you understand this? Yes? All right. Another way is, what is another way, students? What is another way? The another way is, देखो, जिधर आपका हाई प्रेशर चालू होता है, जिधर आपका हाई प्रेशर चालू होता है, एंड स्टूडेंट्स लो प्रेशर आया, फिर वापस से हाई प्रेशर आया, दूसरा हाई प्रेशर जब आएगा, पहला हाई प्रेशर एंड उसके बाद से उसका नेक्स्ट हाई प्रेशर, फर्स्ट हाई प्रेशर एंड उसका नेक्स्ट हाई प्रेशर, उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा स्टूडेंट्स, उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, that is also wavelength. Did you understand this? That is also wavelength. Did you understand this? Yes. And finally, students, and finally, जिधर आपका स्टूडेंट्स, जिधर आपका लो प्रेशर चालू होता है, जिधर आपका लो प्रेशर चालू होता है, लो प्रेशर चालू हुआ, then again you have high pressure, and then what you have is you have the consecutive low pressure point and the consecutive मतलब बाजू वाला low pressure point,
उसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो wavelength. Did you understand this, students? Did you understand this? So students, what is wavelength? What is wavelength? The wavelength is the distance. What is wavelength, students? The wavelength is the distance between the distance between consecutive compression or consecutive rarefaction. Consecutive compression or consecutive rarefaction. Did you understand this? Everybody understood this? तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अभी ना मुझे बताओ कि मैंने यहां से मेजरमेंट चालू किया. I started measurement from here. And students, this is compression number 1, this is compression number 2, compression number 3 and so on. Yes? तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मेजर किया, कैन आई टर्म इट एज वेवलेंथ? मैंने यहां से लेके यहां तक स्टूडेंट्स अगर मैंने डिस्टेंस मेजर किया, कैन आई टर्म इट एज वेवलेंथ? डेफिनेटली आई कैन टर्म इट एज वेवलेंथ. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अगर मैंने स्टूडेंट्स, अगर मैंने रिफ्रैक्शन इधर से चालू हुआ, इधर से लेके मैंने इधर तक दूसरा रिफ्रैक्शन इधर से चालू हुआ, उधर तक मैंने डिस्टेंस मेजर किया, कैन आई टर्म इट एज वेवलेंथ? Can I term it as wavelength? Definitely I can term it as wavelength, students. I can term it as wavelength. First come refraction and uska consecutive refraction, students. Distance between the consecutive refraction is called as wavelength. You can term it as wavelength. अभी मुझे बताओ students, अगर मैंने इधर से measurement चालू किया, this is first compression. फर्स्ट कंप्रेशन से लेके स्टूडेंट्स मैंने थर्ड कंप्रेशन तक मेजर किया, कैन आई टर्म दिस एज वेवलेंथ? नो, दिस इज नॉट अ वेवलेंथ स्टूडेंट्स. ये वाला जो पिंक वाला जो है ना डिस्टेंस, पिंक वाला डिस्टेंस इज नॉट वेवलेंथ. आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? कंजिकेटिव मतलब बाजू वाला कंप्रेशन या बाजू वाला रिफ्रैक्शन लेना पड़ेगा, उनके बीच का डिस्टेंस लेना पड़ेगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट कंप्रेशन एंड दिस इज द थर्ड कंप्रेशन. ये तीनों के बीच ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, दिस डिस्टेंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज वेवलेंथ. एवरीबॉडी अंडरस्टूड सो फार? एवरीबॉडी अंडरस्टूड सो फार? चलो अभी मुझे बताओ, कैन आई कंसिडर दिस एज वेवलेंथ? कैन आई कंसिडर दिस एज वेवलेंथ? सेकेंड कंप्रेशन एंड थर्ड कंप्रेशन जिधर से स्टार्ट हो रहा है, can I consider it as wavelength? Yes, because these two are the consecutive compressions. So I can definitely consider it as a wavelength. Everybody understood so far? Everybody understood so far? So students, wavelength is the distance between consecutive compression or consecutive rarefaction. Distance between consecutive compression or consecutive rarefaction, or distance between consecutive high pressure points, consecutive high pressure points or consecutive low pressure points. Everybody understood so far? Everybody understood so far? Yes. Wavelength का student symbol है. Now listen to this symbol. It is a little funny, huh? It is a little funny. Wavelength का symbol is lambda. Wavelength का symbol is lambda. The symbol of wavelength is lambda, right? The symbol of wavelength is lambda. अच्छा आप ना guess करना, थोड़ा सा guess करो. Wavelength का SI unit क्या होगा? Wavelength का SI unit क्या होगा? SI unit. Wavelength is nothing but length. हम लोग किसमें measure करते हैं? मीटर में measure करते हैं ना. तो wavelength का SI unit is meter. What is the unit of SI unit of wavelength, students? SI unit of wavelength is meter. Everybody understood so far? अरे क्या मीटर पर सेकेंड? मीटर पर सेकेंड velocity होता है बेटा. Length is measured in meter ना.
What is length measured in? The length is measured in meter, right? And lambda matlab kya? Lambda matlab kya? Lambda is the symbol of wavelength. What is lambda, students? The lambda is symbol of wavelength. Everybody understood so far? Everybody understood so far? Yes. Amazing, amazing, amazing. Students, I would want you to watch the recorded lecture once. ये जो lecture है ना, make sure you watch this recorded lecture. The reason is these terms, these common terms are extremely important, students. These common terms are very important in terms of conceptual base. Okay, so make sure you be very thorough with this concept, students. Done, everybody? All right, next. Acha. Abhi, again, observe one thing, students. Observe one thing. Observe two waves I'm going to draw, and you're going to tell me the difference between these two. So again, I'm going to draw two waves, wave A and wave B. Okay. Now, look at wave A and look at wave B. The wave A and wave B I'm going to draw. Just observe this and tell me what is your observation. Okay, are we ready? So the observation is the wave A. Wave A का observation देखो. ठीक है? Wave A का observation ये है. ठीक है? And wave B का observation देखना. Actually wave A इतना ही होना चाहिए, थोड़ा सा आगे सरक गया. This is wave A. ठीक है? Wave B का observation देखो. Now look at the observation of wave B. Look at the observation of wave B. क्या difference दिख रहा है आपको, students? What is the difference between these two waves? Speed नहीं. Correct, students. The difference is time. What is the difference, students? The difference is time. First wave, first cycle, students. First wave में जो cycle complete हुआ, students. कैसा cycle complete हुआ? एकदम quickly complete हुआ ना? जो first wave का cycle था, students, उसको कम time लगा. First wave के first cycle को कम time लगा. B wave के cycle को, students, एक cycle complete करने के लिए कैसा time लगा? Slow हुआ, students. मतलब क्या? ज़्यादा time लगा. Did you understand this, students? So what is that characteristics we are talking about? The characteristic which we are talking about is, the fourth characteristics which we are talking about is time period. The fourth characteristics which we are talking about is time period. The fourth characteristics which we are talking about is time period. Did you understand this? Time period is given by capital letter T. तो आपको क्या समझ में आया, स्टूडेंट्स? क्या समझ में आया? What is time period? The time period is the time taken to complete one oscillation. Time taken to complete one cycle या one oscillation. एक oscillation, एक cycle, एक हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के लिए जितना टाइम लगेगा, स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर को जो कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा, स्टूडेंट्स, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, स्टूडेंट्स. Everybody understood this? Everybody understood this? Yes. And students, you have to remember that there's a relationship between frequency and time period. अपन ने frequency पढ़ा, अपन ने time period पढ़ा, दोनों के बीच में students there's a relationship. The relationship is frequency is equals to 1 upon time period. Frequency is equals to 1 upon time period. Frequency is equals to 1 upon time period. और आप ऐसे भी बोल सकते हो time period is equals to 1 upon frequency. दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं. Everybody understood this. Everybody understood this. So this is the concept of time period. This is the concept of time
period. ठीक है? So we have learned 4 characteristics, students. First one was amplitude. Second one was frequency. Third one was wavelength. And the fourth one, which we studied, was nothing but time period. So that's it for today, students. I hope you understood this 4 characteristics. These are very important characteristics. And let me tell you, students, ये 4 characteristics है ना, ये 4 characteristics wave theory का basic है. These 4 characteristics are basic of wave theory. There's one more characteristics which we'll see in the next lecture, students. So that's it for today, students. We'll wind up here. I'll see you all in the next lecture, students. Yes? Thank you, everybody. बेटा ये फॉर्मूला है, वन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्यों है? बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला. ये फॉर्मूला ही है. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है. ठीक है? All right, yes. So thank you, everybody. I'll see you in the next lecture.